IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान ने IMF को लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी भिजवा दी है। ज़राए के मुताबिक मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त मिल जाएगी। पाकिस्तान को दी जाने वाली पहली किस्त का हजम $1.1 अरब होगा, ये बताया जा रहा है। तो IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होने जा रहा है और इससे तवक्कुआत वाबस्ता हैं। पाकिस्तान ने IMF को लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी भी भिजवा दी है, जबकि IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त मिल जाएगी। पाकिस्तान को दी जाने वाली पहली किस्त का हजम $1.1 अरब होगा। और अब जिक्र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, जो कहते हैं कि हमारी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा। उन्होंने कहा कि दुआ करें आज हमारा IMF का प्रोग्राम मंजूर हो जाए। वो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। हमारी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जब भी इलेक्शन अक्टूबर में, नवंबर में जब भी होते हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान करना है। मेरी दुआ है और मुझे यकीन आप सबकी दुआ है कि जो भी हुकूमत आए अवाम के वोटों से, वो तालीम को नंबर 1 प्रायोरिटी दे कि इसके बगैर अंधेरे रहेंगे। दुआ करें IMF का प्रोग्राम जो है वो आज अप्रूव हो जाए। ये कोई बहुत शादियाने बजाने वाली बात नहीं है। दुखी दिल से आपसे बात कर रहा हूँ कि हमसाय ममालिक जो हैं वो हमसे कहीं आगे चले गए, लेकिन वो कौमें जब तकलीफ आती है, मुश्किलात आती हैं, तो फिर वो अपनी कमर कसती हैं। वो वक्त आएगा कि आज जगह जगह हम जाके पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए उधार मांग रहे हैं, IMF की मिन्नतें कर रहे हैं। ये ज़िंदगी बसर करने का ये तरीका नहीं है। सऊदी अरब ने कल ख़जाने में $2 अरब जमा करवाया। $1 अरब UAE से एक आध दिन में पहुंच जाएगा। हम अगर तकदीर को हमने बदलना है, खुशहाली की तरफ जाना है, तो कोई रुकावट रह नहीं सकती। और अगर इसी तरह मजबूरी की हालत में हमें रहना है और मांगते रहना है, तो ये भी हमारा अपना फ़ैसला है, किसी और का फ़ैसला नहीं है। अहम खबर है, अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। पाकिस्तान की करारदाद में कुरान पाक की बेहुरमती समेत मजहबी मुनाफरत की मज़म्मत की गई। इस करारदाद में कुरान पाक की बेहुरमती में मुलव्वस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आगाह कीजिएगा। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसिल बराए इंसानी हुकूक में पाकिस्तान की जानिब से मजहबी मुनाफरत के खिलाफ पेश की जाने वाली करारदाद मंजूर कर ली गई है और अक्सरियत के साथ मंजूर कर ली गई है। करारदाद के हक में 28 ममालिक ने वोट दिया, जबकि करारदाद की मुखालफत में 12 ममालिक, जबकि 7 ममालिक ने वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया। इस करारदाद की अमरीका और यूरोपीय यूनियन ने मुखालफत की और ये कहा कि ये इंसानी हुकूक और इजहार राय की जो आज़ादी है उससे मुतसादिम है। ताहम इस बहस में पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब समेत दीगर जो ममालिक हैं उन्होंने इस करारदाद की हिमायत की, जिसके बाद इस करारदाद को मंजूर कर लिया गया है। और इस करारदाद के मुसव्वदे में पाकिस्तान की तरफ से ये मजम्मत की गई है कि जो इजहार राय की आज़ादी के नाम के ऊपर जो मजहबी मुनाफरत फैलाई जाती है वो बुनियादी तौर के ऊपर इजहार राय की आज़ादी नहीं है, बल्कि वो मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने की कोशिश है। ये कहा गया। बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने चेयरमैन PTI को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की गवाहान को दोबारा पेश होने की हिदायत। चेयरमैन PTI के वकील और जज के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। हसीब मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई से मुतालिक केस था जिसके ऊपर आज समाअत हुई है और चेयरमैन PTI के जो वकील थे बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर गौहर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। हसीब, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएंगे छोटा पाकिस्तान फार्मासिस्ट समिट और अवार्ड देने की तकरीब इस वक्त जारी है। वज़ीर आज़म खिताब कर रहे हैं। Our prominent business members from pharma industry, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. Let me at the outset pay my heartfelt tributes to your efforts, your ingenuity and your commitment to promote pharma industry and transform
into one of the most going export industry in Pakistan. Your quality of your products is, alhamdulillah, established and beyond any ray of doubt. And you have earned a great name in this field. So I would like to offer my deep gratitude and heartfelt Mubarakbad to all of you on behalf of the government of Pakistan, myself, because you are great ambassadors of Pakistan who have earned a great name. Now the point at issue is that it is a matter of, not a matter of debate, but a matter of commitment on your part, on the part of any government of the day, to protect the poor of this country in terms of pricing formula for life-saving drugs. And now there is inherent contradiction, and I appreciate that because of a rising trend of inputs, their cost, the prices, obviously, cost of production has gone up, and it has a direct confrontation with the protection of the poor in this country in terms of important life-saving drugs. But that does not mean that the government of the day should ignore your pressing demands and valid challenges. Government of the day has to obviously protect the poor on one hand and also ensure that the industry is in a stable condition and does not suffer for undue delays in terms of decision making. That is one of the main reasons I constituted this committee. And this committee had extensive discussions with you. Some of you sitting here met me individually and collectively. And I'm very grateful to my team, Finance Minister Ishaq Dar, Health Minister, Commerce Minister, and Minister for Industries and others, to have resolved this issue to a large extent. But the point at issue is that we are gathered here not to make speeches, but to do something cogent, palpable, to support your great efforts, and in a manner which should promote and support your efforts and also protect the needy and the helpless. May I also recount and recollect from my memory a couple of instances which you are very well aware of. Back in 2016, when I was serving as the Khadim of Punjab, I had decided, and you know it very well, to procure medicines for government hospitals. And I made a public statement that the quality of the medicine would be, which can be easily accepted by the highest office bearer of the country down to the common man. And for that, I had dedicated roughly about 7-8 billion rupees for procurement. You are well aware. We went for a very transparent procurement mechanism, and companies were pre-qualified, obviously,
because we didn't want spoilers to spoil the entire effort. And as a result of that, there was hue and cry, I know. But as a result of that, we were able to select 16, 18, 20 companies. This is my memory, I hope I'm not wrong. And then, ladies and gentlemen, we went for this bidding process. And then those companies who had qualified for those procurements, their samples were sent abroad, as well as यहाँ की लैब का क्या नाम है जो फेडरल गवर्नमेंट में होती है? ना उसका वो एब्रिविएशन क्या है उसका? No. There's a testing laboratory, but there's an abbreviation for this. Drug testing laboratory, something like that. And I concede that at that point in time, we had a few labs in Punjab which were up to the mark, but most of others were redundant or not, efficient to come up to the level of people's expectation. Now, here is the story. We sent those samples to this federal lab, the ones in Punjab, and then you know it very well. It's an open secret. It's not something which you are not aware of. And then samples to Britain and France and some other countries. 90% or more than 90% of the lab reports in Pakistan were all okay. And the lab reports from abroad were about 40% okay. Or 50%, I don't remember, but this was the figure I remember. There was obviously hue and cry, and the companies who are very well known, mashallah, you're sitting here and you are doing a great, fantastic job, no doubt about it. But this was a fact. And then we established our own labs in Punjab of state of the art, you know it very well. At Lahore, then I think at Multan, and some other place, Faisalabad, thank you, and other places. Next year, when we made this procurement, and reports were, samples were sent to labs, Europe and other countries, and these labs in Punjab. Alhamdulillah, I'm telling you, reports, samples had exactly the same report as international reports. So I salute your hard work. I salute your wonderful contribution, and those labs which were established in consultation with a British company. I remember I visited their head office in London as well, out of London. I think the State Secretary was speaking in American accent, and my honorable chairman of this association was also speaking English, but please allow me to speak in Urdu now. तो मैं आपको, sorry, I hope you understand Urdu very well. They will translate to you later on. तो मैं कह ये रहा था कि बाखुदा आप बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तानी हैं और आपने बहुत मुल्क का नाम बनाया आपने, लेकिन जो मुश्किलात हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको हमने मिलकर उसको हल करना है. मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आप मुनाफा छोड़ दें और नुकसान करके, सवाल नहीं पैदा होता. कारोबार इस तरह चलता नहीं है. आप प्रॉफिट्स कमाएं, जो आपका हक है वो आप रिस्क लेते हैं. यू आर ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स. बैंक से आजकल जो रेट है वो भी 19-20% है या 22% है जी, 22% है, जो कि इट्स अ किलर. इंशाल्लाह वक्त आएगा कि ये पॉलिसी रेट्स कम होंगे इंशाल्लाह. आज रात को IMF का बोर्ड की मीटिंग हो रही है, खुदा करेगा इंशाल्लाह उसमें
हमारा प्रोग्राम अप्रूव होगा, आपकी जो एलसीज हैं और खुल सकेंगी, हमारे रिजर्व्स बढ़ेंगे। लेकिन दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ लॉन्ग जर्नी जिसमें बड़ी हार्डशिप्स आनी है, बड़ी मुश्किलात आनी है। उसमें हम दोनों ने, जो भी हुकूमत वक्त होगी, सियासतदानों ने, कारोबारी हजरात ने, आपने और मुल्क के तमाम इदारों ने मिलकर इस मुल्क को बनाना है। इसके लिए मैं आपकी बात मैंने बड़े गौर से सुनी है। मैं एक कमेटी आज भी बनाने को तैयार हूँ ताकि जो आपका जो एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल है उसको हम किस तरह और उसको बढ़ाएं, उसको एक्सपैंड करें। आपके जो जेन्युइन जो आपके चैलेंजेस हैं उनको हम किस तरह हल करें। लेकिन अंग्रेज़ी में वो कहते हैं इट टेक्स टू टू टैंगो। हज़रत मौलाना बैठे हैं, मैं दूसरा कह देता हूँ कि ताली दो हाथों से बजती है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप अगर बड़ी अर्क-रेज़ी से बैठ कर हुकूमत के साथ इन मामलात को डिस्कस करें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जो आपने मुतालबात पेश किए हैं, इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत की आइनी मुद्दत ख़त्म होने से बहुत पहले हम ये मामलात हल कर लेंगे और आपको हम ये इंशाअल्लाह ज़रूर। लेकिन इसमें आपको भी बढ़ना होगा। मैं जब पेरिस में मिला IMF की MD को, तो उसने कहा कि प्राइम मिनिस्टर there is a big gap between our asks and what you are prepared to undertake those steps. तो मैंने कहा कि yes, we are going to step forward and try to come to a meeting point. लेकिन आप भी इसमें आगे बढ़े। उसने कहा पहले तो उसने कहा ये हो नहीं सकता, फलां लंबी बात थी। लेकिन बाद में जब बर्फ़ पिघली तो अल्हम्दुलिल्लाह मामला सुलझे। और फिर देखा, मैं आपको बड़े खुलूस दिल से बता रहा हूँ कि इस प्रोग्राम में ये कोई मिठाई बांटने का ये मौका नहीं है। आप जानते हैं IMF की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं वो जकड़ के रखा हुआ है हमारी इकॉनमी को। यही उनका मॉडल है पूरी दुनिया में। लेकिन आज हमें सब्र के साथ हमें इसको एक्सेप्ट करना है उस वक्त के लिए कि आप मिलकर हम सब मेहनत करके इसार और कुर्बानी के साथ पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ हम ले जाएं। और ये इंशाअल्लाह नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है, लेकिन अपना मुश्किल ज़रूर है। दुनिया में कोई भी चैलेंज होता है उसके साथ अपॉर्चुनिटी होती है। तो मैं आपको बता जा रहा था कि फिर अल्लाह ताला ने किया, फाइनेंस मिनिस्टर ने दिन रात मेहनत की, उनकी टीम ने कई दिन, हमारे जो सफारती सतह पर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़ी काविशें की। कल जो $2 अरब जो आया है, ये खालिसतन, ये मैं आपको बिल्कुल ये बात देखिए, हम अगर बात को लाख छुपाएंगे तो छुपती नहीं है। सच जो होता है वो 100 साल बाद भी सामने ऊद कर आता है। झूठ भी इस तरह नहीं छुप सकता। वो भी कभी अपना आप बहुत कोई सेंसिटिव बात हो तो कानों में बात करेंगे, लेकिन पता हर एक को होता है कि मामला असल है क्या, हकीकत क्या है। बिल्कुल। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि $2 अरब जो आया है, ये खालिसतन ये हमारे जो नए आर्मी चीफ हैं जनरल नासिर मुनीर, उनकी खालिसतन उनकी काविशों से आया है कल, और $2 अरब जो जमा हुआ है। कहना ये चाहता हूँ, जहाँ पर मैं मिला हूँ MD IMF को पेरिस में, बड़ी हमने मेहनत की, सियासी महाज पर बेपनाह मेहनत की, मैंने बताया आपको। लेकिन अगर मैं ये कहूँ जनाब मैंने वो भी तीर मारा तो आप कहेंगे ये क्या हमें राम कहानी सुना रहा है। ये कौम तभी आगे चल सकती है, आगे बढ़ सकती है विद यूनिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन। अपने अपने दायरे में रहकर अगर हम मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो बाखुदा ये पाकिस्तान चंद सालों में आप अपनी मेहनत से उसको आप वहाँ पर पहुँचा देंगे जहाँ पर पहुँचने का इसका हक है। आज सुबह मैंने एक तालीमी सेमिनार में मैंने ये बात कही थी कि मिडल ईस्ट में वहाँ पर अल्लाह ने उनको तेल दिया है और अल्लाह का शुक्र है हमारे वो बरादर ममालिक हैं। हमें अल्लाह ताला ने आप जैसे जहन दिए हैं, आप जैसे कारोबारी लोग दिए हैं जो कि दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं और मुल्क के लिए आप अरबों डॉलर कमाते हैं। ज़मीन है ज़राअत के लिए, मादनियात हैं जहाँ पर खरबों, अरबों नहीं खरबों डॉलर जहाँ पर
جہاں پر وہ دفن ہے. آئی ٹی ہماری ٹیکنالوجی جو ہے آپ جانتے ہیں, وی ہیو اے یوتھ بلج. ہماری جو نوجوان جو پود ہے وہ 60% یہ پاکستان کی آبادی کا, ان کو ہم ہنر سکھائیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی, ووکیشنل ٹریننگ سکلز دیں اور پھر ان کو ہم باہر بھجوائیں. یہ ملک جو ہے یہ ہمارا جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ایک نیا ایک افق پر ایک نیا ملک بن کے آئے گا, لیکن باتوں سے نہیں, عمل سے اور محنت سے. میں صرف زیادہ I'm not here to deliver a sermon or a lecture. میں صرف آپ کی خدمت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے بہت ہی محترم آپ سرمایہ کار ہماری کمیونٹی بیٹھی ہے فارما سے. میری آپ سے گزارش ہے کہ غریب آدمی کا آپ خیال رکھیں, اس کی دوائی کا. حکومت جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے تمام جائز مطالبات ماننے کے لیے میں حاضر ہوں. اور آج ہی میں کمیٹی جو کانسٹیٹیوٹ کر دیتا ہوں جو انہوں نے بتایا ہے. 2 ہفتے کا ہم ٹائم رکھتے ہیں, آپ بھی کوشش کریں, ہم بھی کوشش کریں گے 2 ہفتے میں ان مطالبات کو ہم منظور کر کے جو جائز ہیں ہم آگے بڑھیں اور پاکستان کو آگے بڑھائیں.